अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ कनेक्टिविटी इशू चल रहा था मेरा जूम के साथ। Now it is resolved and I think you can hear me clearly. Let me first show you that I have got this writing pad uh, and we'll use it as and when required. In this course, it is hardly required. Okay, first of all, let me share with you one of the sample question where e power x minus 4x squared is equal to 0. This is one of the problems in the problem set. And this Excel sheet that I'll share you with you after the lecture uh, gives you solution of the problem using bisection method. Where bisection method sheet जो है इसमें मैंने ए और बी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने के लिए कंडीशंस लिख दी हैं. So this is standard sheet can be used to solve any problem. What you need to do is that uh, introduce the appropriate interval here. ए और बी की जो वैल्यू आप किसी भी प्रॉब्लम में कंसिडर कर रहे हैं वो वैल्यूज यहाँ रखें और यहाँ पे फंक्शन जो है उसको रीडिफाइन कर दें. यहाँ भी रीडिफाइन कर दें. मिड पॉइंट के रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मिड पॉइंट पे फंक्शन रीडिफाइन कर दें एंड देन कॉपी drag and your problem will be solved in less than 5 minutes. So similarly in this sheet I have made a part of the sheet where the same problem is solved using secant method, using false position method, uh, Newton's method and fixed point attraction method के दो rearrangement discuss किए हैं मैंने. So going back to our discussion on the subject, I think the last thing that I was discussing with you was what? Okay, start with the problem set. Yes, there are some mistakes in the problem sets as indicated by some of you, and I replied to them individually as well as on the WhatsApp group. 16 के बजाय अगर आप इसमें से 8 सेलेक्ट करके डेडलाइन तक सबमिट कर दें तो दैट इज सफिशिएंट. एंड जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है और चीज़ें डिस्कस की हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि most of you are now able to understand how to use the method to solve a problem. Uh, so this is, I think, the last topic that we discussed last time, Newton's method, its development through Taylor expansion, taking Taylor expansion to first degree,
and then assuming uh, x to be the new approximation and replacing x by x1 and solving this equation for x1, and we get the basic formula for Newton's method, which is compared with the formula of the secant method, and we see that the secant slope of secant line is replaced by the slope of tangent line. Uh, Similarly, with the x1 as the first approximation, the next approximation x2 can be calculated using a similar formula and extended it to generalize for every previous approximation. The new approximation can be obtained using this formula, and involvement of derivative function at successive value of x indicates that f must be continuous, क्योंकि डेरिवेटिव उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. So again we apply this method only on equations fx is equal to 0 where f is continuous. If x value at any x value derivative function becomes 0, the method crashes. So the method diverges if the derivative values start decreasing to small numbers because the derivative in the formula is present in the denominator. 0 आ गया अगर derivative तो method crash कर जाएगा. Derivative values are very small, then this number will be very large, and the previous result and new result will be at a large distance and larger distance instead of coming closer and closer as required by convergence of the method, as required by finding a root correct to a large number of decimal places, whether it is 4 or 5 or 40 or 50. Uh, the method can be divergent if the sequence of results start alternating between different values without coming closer to a single value. These are possible things to be noted down. Geometrical development of the Newton's formula you have studied in calculus, and I've reproduced here, and I hope you can understand this geometry yourself. I'll leave it for your study. Then some examples we discussed that if you have to find the root of an arbitrary equation, you have to first work out where for what values of x the function value changes its sign, and these values of x are the values which bracket the root. So you work on some value close to 1.2 and 1.3 to start Newton's method. So we start with 1.25, function value evaluated, derivative is this, derivative value evaluated, and the new value evaluated as uh, x minus fx divided by f prime x. That is the new value, which is taken as new approximation, and at new approximation function value derivative value evaluated, and this x minus this fx divided by this f prime x get the new value, and we see that in this case the method has converged very quickly. Uh, you have another root between 1.5 and 1.6 as indicated by this locating root process. Sign of function value changes between 1.5 and 1.6 again, and that root is also evaluated, and starting with 1.55 as the initial approximation. I discussed these examples, and I showed one example here where the Sir, convergence. G. सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में. Okay, 9 students. They will join. As and when there is someone in waiting, please जैसे अभी बताया बता दीजिएगा मुझे फौरन. अच्छा जी. ये एग्जांपल हमने डिस्कस की थी जिसमें वी हैड अ रूट क्लोज टू 1.5, but the convergence is very small, very slow. Uh, Generally, it is thought that the Newton's method is converges very rapidly, but we have already discussed conditions under which uh, the convergence may be slow. Then we demonstrated the use of Newton method for this particular problem. कि हमें किसी नंबर का कोई सा रूट चाहिए, 13 का हमें 43rd रूट चाहिए,
तो हम क्या करेंगे? I have demonstrated this already, and I hope you people understand this. How we make a function. A fourth root of 7 is required. That means हमें वो number required है जिसकी fourth power 7 हो. That means x power 4 minus 7 is equal to 6. 0 is to be solved, and then we take the derivative and use it to solve the problem and find 7 raised to power 1 by 4, which is correct to 9 decimal places. But here we also demonstrated one more thing, that अगर हम न्यूटन्स मेथड में यहाँ न्यूमरेटर में फंक्शन है, तो फंक्शन हमारा x पावर 4 माइनस 7 है, तो यहाँ x n पावर 4 माइनस 7 रख दें, और डिनोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव यानी 4x क्यूब, और उसको अलजेब्रिकली सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला आ जाता है जिसमें हम एक ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू 1.5 ली, वो इस राइट साइड पर डाली, नई वैल्यू निकल आई, फिर उस नई वैल्यू को इस राइट साइड पर डाला, ये सब का कैलकुलेट किया, फिर नई वैल्यू निकल आई. So some steps, these two or three steps are reduced to one step only. We'll see how it happens. And हमने इसको जनरलाइज भी किया कि अगर हमें किसी भी नंबर n का क्यूएथ रूट चाहिए, तो हमारे पास फंक्शन बनेगा x पावर q माइनस n, उसका डेरिवेटिव होगा q इंटू क्यू एक्स पावर q माइनस n, और ये हम न्यूटन वैल्यू फार्मूला रख दें, तो किसी भी नंबर n का क्यूएथ रूट निकालने के लिए ये एक फार्मूला आ जाएगा, which is basically an introduction to the next method that I have to study or make you study today. So I switch to fixed point iteration method. Did I discuss anything about fixed point iteration method last time? सर आपने मेजॉरिटी डिस्कस कर लिया था मेरे ख्याल से. इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट डिस्कस कर लिया था, रीअरेंजमेंट्स की बात कर ली थी. यस सर, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर ली थी, और ये एल्गोरिथम भी डिस्कस कर लिया था कि कोई भी अगर हमारे पास इक्वेशन एफ एक्स इजिकल टू 0 है, तो उसको हम रीअरेंज करके एक्स इजिकल टू जी एक्स लिख सकते हैं, और that itself becomes an algorithm, or it's very simple algorithm. Lekin there are issues with this algorithm. Can be written as this: you consider an equation, उसकी जिसका रूट हमें चाहिए close to some number x naught, इसकी rearrangement consider करें x is equal to gx, and we've seen that there can be many rearrangements. Set up the tolerance value and then compute x1 is equal to gx naught, यानी starting x value पर g की वैल्यू निकालें, रिजल्ट आएगा x1, जो भी आएगा रिजल्ट उसको फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, टॉलरेंस को चेक करते चले जाएं, अगर पिछला x और नया x का डिफरेंस जो है वो टॉलरेंस से कम हो गया, तो हमें रूट मिल गया, एग्जिट कर जाएं, x वैल्यू मॉडिफाई करें एंड गो टू स्टेप 4 एंड x1 रख के x2 निकाले, फिर x2 रख के x3 निकाले, एंड सो ऑन. टॉलरेंस आएगा तो एग्जिट कर जाएं. एक कंडीशन इसमें लगा लें कि जिस तरह मैंने पिछले किसी एल्गोरिथम में कहा होगा डाइवर्जेंस चेक करने के लिए, कि इसमें डाइवर्जेंस जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहूँ कि एक लार्ज नंबर को DIY कह ले, तो जहाँ आपने टॉलरेंस चेक की है, इसमें अगला स्टेप जो है वो ये कर लें कि अगर यहाँ पे x1 minus x naught is has become greater than the diverging a large number, तो उस सूरत में भी आपने एक्सेप्ट कर जाना है with the message that process is diverging. This is necessary for programming effort, but when you work manually or with a calculator or with Excel sheet, you will come to know whenever the divergence is there.
So I go to that problem and I discuss this problem के simple quadratic equation है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जिसके रूट्स हमें पता है उसके बावजूद हमने इसको मेथड डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसके 3 रीअरेंजमेंट्स लिखे जिसमें एक में हमने क्या किया था, दूसरे में क्या किया था, तीसरे में क्या किया था, ये डिस्कस कर चुका। और हमने ये देखा था कि पहली रीअरेंजमेंट जो है उसमें रूट 3 आ गया, दूसरी रीअरेंजमेंट रूट -1 आ गया, और तीसरी रीअरेंजमेंट जो है वो डाइवर्ज कर रही थी। So note that the rearrangement G1 converges 3 and G2 converges to -1, but G3 does not converge. मैंने ये क्वेश्चन भी रेज किया था कि ये how this did not happen because we were dealing with a quadratic equation. किसी भी इक्वेशन में ऐसा हो सकता है कि एक रीअरेंजमेंट जो है वो कन्वर्ज करे, दूसरी ना कन्वर्ज करे, but of course the matter is very serious and we need to explore it more. एक आध एग्जाम्पल और यहाँ पे डिस्कस की हुई है जो कि क्यूबिक इक्वेशन की है। इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट जो है हमें एक रीअरेंजमेंट से मिला जो कि ये है। ये वाला रीअरेंजमेंट जो है ये डाइवर्ट कर गया बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया था इसमें। और तीसरा रीअरेंजमेंट जो है वो ऑल्टरनेट कर रहा है, लिहाजा वो कन्वर्ज नहीं कर रहा। तो ऑल्टरनेट करने की के अलावा एक वैल्यू बहुत छोटी हो रही है फंक्शन की जी की, और एक वैल्यू बहुत बड़ी हो रही है। जस्ट टू रिमाइंड यू दैट हमने कहा था कि किसी भी नंबर का हमें रूट निकालना है तो उसके लिए हमने ये फार्मूला डेवलप कर लिया था। तो अब ये जो फार्मूला हमने डेवलप किया था ये हमारा जी होगा। राइट हैंड साइड फंक्शन इज जी। तो जो भी रूट आएगा, जो भी फिक्स पॉइंट आएगा, दैट विल बी द रूट ऑफ ओरिजिनल प्रॉब्लम। दैट मीन्स 15⁻⁴ का की वैल्यू जो है वो इस एल्गोरिथम से निकलेगी। So इसके अंदर wherever there is capital N which is the number whose root is required is placed here, and जो सा रूट निकालना है, 7th रूट निकालना है, तो डिवाइडेड बाई 7 दोनों जगह पे, और यहाँ पे 1<7 जो कि डेरिवेटिव की वजह से आया है। और हमने कहा कि स्टार्टिंग विद 2 पॉइंट्स, एक दफा 1.1 से शुरू करेंगे इसको और एक दफा 1.5 से शुरू करेंगे, देखें क्या होता है। 1.1 से शुरू किया तो वी गेट कन्वर्जेंस एंड इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स, वेयर अगर हमने 1.5 से शुरू किया तो वी द कन्वर्जेंस इज ऑब्टेन्ड very early because 1.5 is closer to the result, 1.1 is not closer to the result. That is another aspect of convergence or divergence cases. So that's it about fixed point iteration method. Uh, our original problem is fx is equal to 0, जिसको हम चेंज करेंगे x is equal to g1x की फॉर्म में। जो रिजल्ट फिक्स पॉइंट आइटरेशन एल्गोरिथम से आएगा वो रिजल्ट इस इक्वेशन को भी ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करेगा और इस इक्वेशन को भी ऑलमोस्ट सेटिस्फाई करेगा। सो टू फाइंडिंग अ रूट ऑफ fx is equal to 0 हम ये रीअरेंजमेंट्स करके देखते हैं, and at times they converge very rapidly, at times they diverge, but what's the fuss? So I just move on to a few things about this fixed point issue कि ये issue है क्या। In fact, fixed point theory is a separate branch in mathematics which has lots of application in many uh, fields of physics, biology, meteorology, etc., etc. Even in computer science. तो हम थोड़ा सा फिक्स पॉइंट थ्योरी के बारे में बहुत मुख्तसर सा पढ़ेंगे
we explore fixed point theory in a bit detail form in a second course on numerical analysis, wherever it is offered. But in your syllabus, I think there is only one course. MS program में mathematics में advanced numerical analysis course है. That can be considered a second course. So first of all, what is the definition of fixed point? A fixed point of any function g is a point on the graph of the function such that gp is equal to p, or it is the point of intersection of the graph of the straight line y is equal to x and the graph of y is equal to gx, जो कि हमने पिछली डिस्कशन में मेंशन किया था. सो जिस तरह रूट ऑफ एन इक्वेशन जो है वो basically is the point where the graph of the function intersects with x-axis. Fixed point of a function is the point of the graph of the function where it intersects with the line y is equal to x. There are some conditions under which the fixed point exists. This theorem, which we are just considering as a piece of knowledge, not going to prove it, but demonstrate it using a figure, that there is a function g which is continuous over the interval x1 to x2. There will exist at least one fixed point of g in the interval x1 x2 if function values जो हैं यानी output values वो इन्हीं starting and terminating input values के बीच में आए for every x between x1 and x2. So let us see this figure, and our interval x1 x2, and since y values, that is values of g, should also be x1 x2, तो हमने x is equal to x1 की straight line vertical बनाई, x is equal to x2 की line बनाई, y is equal to x1 की horizontal line बनाई और y is equal to x2 की horizontal line बनाई. इनके से एक डब्बा बन गया, square बन गया. Now there are different possibilities of functions that can be considered that demonstrate the existence of a fixed point under this condition which is stated in the theorem. Simplest function जो हो सकता है जो इस जिसका ग्राफ जो है that remains within this box is the straight line itself y is equal to x. मैंने यहाँ लिखा हुआ red line is y is equal to x. और देखना मुझे ये है कि और पॉसिबिलिटीज फंक्शंस की क्या हैं जो कि इस लाइन को क्रॉस करती हैं. तो भाई ये ग्रीन लाइन अगर ये कोई फंक्शन g है तो it crosses at one point this line y is equal to x, whereas this brown line which may also represent some function, अगर green line increasing function था तो ये decreasing function है. It also crosses the straight line y is equal to y is equal to x at one point. But this blue curve, which may be some arbitrary function, somewhere increasing, somewhere decreasing, somewhere increasing, somewhere decreasing, and it may cross the line y is equal to x at multiple points. So when we use fixed point iteration method, in fact हम function g का वो point तलाश कर रहे हैं जहाँ फंक्शन का ग्राफ जो है वो y is equal to x को क्रॉस कर रहा है. So existence is ensured whenever existence of a fixed point in an interval x1 to x2 will be ensured कि इस interval में y values जो हैं उनकी यानी height of graph also remain between number x1 and x2. So that is a condition under which you will have a fixed point. This is the existence theorem, and then there is a uniqueness theorem. देखो हमारी इस फिगर में और हमारे इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि there exists at least one fixed point.
तो ब्लू केस में जो है वो 2 फिक्स पॉइंट बल्कि 3 फिक्स पॉइंट नजर आ रहे हैं, बिकॉज ब्लू कर्व जो है क्रॉसिंग द लाइन y इज इक्वल टू x, रेड लाइन एट 3 पॉइंट्स। तो ये थ्योरम एक्जिस्टेंस थ्योरम है, और एक और रिजल्ट आता है जिसको हम यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं कि अंडर सम पर्टिकुलर कंडीशन एक इंटरवल में फिक्स पॉइंट जो है वो यूनिक होगा। The uniqueness theorem say that a function is continuous over the interval, satisfies this condition. That means there is definitely a fixed point in the interval, और इस interval के हर point पे derivative, I should have written that is continuous and differentiable over the interval. तो अगर फंक्शन वैल्यूज x इंटरवल x1 x2 के दरमियान ही रहती हैं, or for every x in the interval the derivative value is less than 1, then function g has a unique fixed point. यानी एग्जिस्टेंस वाली कंडीशन में एक कंडीशन हमने ऐड कर दी कि डेरिवेटिव वैल्यू इज लेस देन 1, तो फिर फिक्स पॉइंट यूनिक होगा। लेट अस लुक एट द फिगर अगेन। ये जो ग्रीन कर्व है, if you have sufficient experience with slope of tangent line, then green जो है curve, इसका slope of tangent at any point will be less than 1, whereas this brown curve, the derivative is negative, slope of tangent is negative, but the uniqueness theorem say that the mod of the derivative value, so that will be less than 1, but this is not the same case with the blue curve. ब्लू कर्व में स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव लार्ज है, फिर नेगेटिव, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव लार्ज एंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सो द ब्लू कर्व इज नॉट सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन. The mod of derivative should be less than 1 throughout the interval. So that is why this blue curve has multiple fixed points. Then the theorem that gives the condition under which fixed point iteration method will converge. तो वो कहता है कि G is continuous over AB, Gx belongs to AB. In addition, G prime X exists on the interval AB, and there is a constant which is less than 1, and the mod of the derivative of G is less than or equal to K for every X belong to this. अगर ये सारी कंडीशन यानी एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स पॉइंट इन द इंटरवल ए बी, यूनिकनेस ऑफ फिक्स पॉइंट इन द इंटरवल ए बी, उसके अलावा एक और कंडीशन हो कि आप स्टार्ट करें फिक्स पॉइंट मेथड को फ्रॉम एनी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, तो जो सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट आएगा दैट विल डेफिनेटली कन्वर्ज. नाउ दिस इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स एज कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए, आपने x इक्वल टू जी एक्स बना लिया, उसके बाद g को आप एक्सप्लोर करें कि g की वैल्यूज गिवन इंटरवल में g यानी y वैल्यूज भी a और b के दरमियान रहती हैं. इट्स नॉट इजी टास्क, मेजर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी इसमें घूमते हैं. फिर उसके बाद डेरिवेटिव वैल्यू फॉर एवरी पॉइंट between a and b, for every x between a and b is less than 1 in fact, or less than some constant k which is less than 1 but positive constant. इसकी डिटर्मिनेशन भी मुश्किल होती है. यानी अगर हमें पहले से नहीं बताया गया कि ये इंटरवल किस इंटरवल में यूनिक पॉइंट एग्जिस्ट करता है, और हम पहले से मालूम करें कि प्रोसेस कन्वर्ज करेगा कि नहीं करेगा, इट्स नॉट एन इजी टास्क, एंड this kind of a problem is considered in a course at higher level. So I will let me go to the next method that I want to study. Fixed point के बाद
हमने जो भी मेथड अभी तक कंसिडर किए हैं, इन तमाम मेथड्स में हमने लीनियर प्रोसेस इख्तियार किया है। इन व्हाट सेंस? जब हमने बाइसेक्शन मेथड किया तो हमने बेसिकली मिड पॉइंट इस्तेमाल किया, एक्स एक्सिस पे इंटरवल का मिड पॉइंट इस्तेमाल किया। जब हमने सीकेंड मेथड किया तो हमने ग्राफ के 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बनाई और उस स्ट्रेट लाइन का जो इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस से था उसको नई अप्रोक्सीमेशन ली, यानी इसमें भी लाइन इस्तेमाल की। फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में जो अभी हमने ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लिया, उसमें भी हमने एक लाइन इस्तेमाल की और वो लाइन है y इक्वल टू एक्स। यानी किसी फंक्शन g का आप अगर फिक्स पॉइंट तलाश कर रहे हैं तो असल में gx के ग्राफ पे वो पॉइंट तलाश कर रहे हैं जहां ग्राफ y इक्वल टू एक्स को इंटरसेक्ट करे। तो ये सारे के सारे मेथड जो लीनियर मेथड है। I want you to expose yourself to a method which is more advanced in the sense कि in all previous method हमारी किसी लाइन को इस्तेमाल करने का मतलब है कि हम ये समझ रहे हैं कि क्लोज टू द रूट फंक्शन जो है दैट इज बिहेविंग एज ए स्ट्रेट लाइन, but it is possible that close to a root the function may not be behaving as a straight line, but it may be behaving as a quadratic function, and that means I should need a parabola instead of a straight line to approach the root. That is the basic idea behind this Muller's method. Now, I will, to start with, I will not discuss the development of method, but I will discuss the algorithm of method. I'll discuss the development of method next time because I don't have more than 10 minutes left. So I will go to the algorithm directly, leaving out this development to be explored next time. I'll describe the details of this development, and you can see there is a lengthy development of this method, and you will require more concentration to explore the method, how it is developed. Now, the major steps involved in the application of method. Now, the first step is you have to choose an interval and note कि interval उल्टा लिखा हुआ है, यानी index उल्टा लिखा हुआ है। इसका मतलब है जो लेफ्ट साइड का पॉइंट है अब हम उसको x2 कह रहे हैं और जो राइट साइड का पॉइंट है उसको हम x1 कह रहे हैं। इसमें रूट है किसका? इस इक्वेशन f(x = 0) का। Select function tol, यानी टॉलरेंस दैट विल बी अप्लाइड ऑन फंक्शन, कि कब फंक्शन वैल्यू जो है वो बहुत छोटी हो जाती है। एंड एफ टॉल कैन बी 10⁻³ 4 5 6 7 जितनी डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी चाहिए। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि हम इन दोनों x2 और x1 के बीच में एक पॉइंट अज्यूम करें, x की वैल्यू x0। अब इन 3 पे जिसमें लेफ्ट में x2 है, बीच में x0 है, राइट पे x1 है, फंक्शन वैल्यूज कैलकुलेट करें। x1 माइनस x0 को h1 कहें, x0 माइनस x2 को h2 कहें। इसके बाद एक नंबर डिफाइन करें जो इन दोनों h जो कैलकुलेट किए गए हैं, h2 और h1 की रेशियो जो है उसको हमने एक नंबर कह दिया गैमा, यू कैन कॉल इट एनी अदर नंबर। और c = fx0 अज्यूम कर लें, यानी fx0 की वैल्यू को आप c कह लें। उसके बाद we calculate a number a using f1, f0, f2, gamma, h1, all these things using this formula. Then we calculate b using the value of a calculated here, h1, f0, f1. Now, if b is positive, we set x is equal to x0 minus 2c divided by b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर b नेगेटिव आ गया है तो फिर सेट x is equal to x0 माइनस
2c upon b minus square root b square minus 4ac. Now, if b is either of them means कि b square minus 4ac 0 हो जाएगा. So b is equal to 0. Either of them work 4ac is less than 0. If 4ac is greater than 0, the method will crash down. अच्छा जनाब, अब देखना ये कि ये जो x कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर, these are the two formulas. One, when b is negative. The other formula for x, new x, where b is negative. जो भी x आया, अगर वो मिडिल पॉइंट x नॉट के राइट पे है, तो नई रीअरेंजमेंट क्या होगी कि हम x2 अपनी जगह रखेंगे और सॉरी x को x2 कर देंगे, यानी जो नया x आया है वो लेफ्ट मोस्ट ले लेंगे, x नॉट बीच में रहेगा, x1 पुराना रहेगा. लेकिन अगर x इज लेस देन x नॉट, तो रीअरेंजमेंट ऐसी होगी कि हम x1 को x ले लेंगे, x नॉट अपनी जगह रहेगा और x2 अपनी जगह रहेगा. आफ्टर मेकिंग दीज रीअरेंजमेंट्स, फंक्शन पे टॉलरेंस यूज करेंगे. अगर टॉलरेंस अचीव हो गई तो रूट आ गया, अदरवाइज गो बैक टू द कैलकुलेशन दैट स्टार्टेड एट number 3, because we have readjusted x2, x0, x1 in that order in both these cases. So the algorithm is also lengthy, and we have demonstrated the use of this algorithm on this function fx is equal to 3x plus sin x minus e power x, और हम कह रहे हैं यूलर्स मेथड से करें काम. लोकेटिंग द रूट, क्योंकि इंटरवल नहीं पता, तो हमें लोकेट करना है रूट. wherever there is a trigonometric function involved, अगर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो you should use your calculator in radian mod. One of your friends used calculator in degree mod and was getting a root between 89 and 90. तो मैंने उसको चेक किया, तो एक्सेल शीट पे जो हम साइन और कोसाइन के लिए के ब्रैकेट में कोई भी नंबर रख दें, एक्सेल जो है उसको रेडियन ही कन्वर्ट समझता है जब तक कि आप उसको डिग्री में कन्वर्ट न करें. मैंने एक्सेल शीट में चेक किया तो पता था 0 से 90 तक there were 32 roots, and then your friend got the point कि calculator was not used in the gradient mod. तो जब भी trigonometric functions involved हो रहे हैं अपने manual calculation में calculator को radiant mod में रखिएगा. Okay, first I did the exercise of locating the root, and I found the change of sign between 1 and 2. Between 0 and 1, between 1 and 2, और ये पता नहीं मैंने क्यों कहा बाहर. There is a root between 0 and 1 and 1 and 2. So where do I work? I work like this. I've gone from 0 to 1. 0 is on the left, 1 is on the right, और इनका मिड पॉइंट जो है 0.5 लिया मैंने. इन सब पे फंक्शन वैल्यूज कैलकुलेट की. These are the function values. Then h1, which is x1 minus x0, h2, which is h1 is x1 minus x0, and h2 is x0 minus x2 to keep them positive. तो h1 और h2 कैलकुलेट किया. यहाँ मैंने गैमा लिखने के बाद g लिखा, जो कि इन दोनों की रेशियो है, सेम है. वैल्यू ऑफ a कैलकुलेट हुई, तो भी मैं एक ही पेज पे ले जाऊँ. So I've done this calculation vertically
जी कैलकुलेट करने के बाद ए का फॉर्मूला इस्तेमाल करके ए की वैल्यू, बी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बी की वैल्यू, सी का फॉर्मूला इस्तेमाल करके सी की वैल्यू. Then the value of x is to be calculated on the basis of whether b is positive or negative. तो पॉजिटिव है तो हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, बी पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है नया एक्स वैल्यू निकालने के लिए, और बी नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है नया एक्स निकालने के लिए. Once the new x has been found, we calculate function value at this new x. And let us see कि अब अगली आइट्रेशन, ये बता दूं यहाँ पे मैंने आइट्रेशन जो है वो वर्टिकली की हुई है इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली, जो पिछले मेथड में था. अब देखें मेरे पास x की एक वैल्यू ये है, एक ये है, एक ये है, और एक और आ गई 0.35. अब आउट ऑफ दीज 4 वैल्यूज 0.35 इज द न्यू वैल्यू. मैंने अब नया अरेंजमेंट क्या बनाया कि 0.5 को बीच में रखा, 0 टू द लेफ्ट नहीं, 0.5 को बीच में नहीं रखा. 0 is on the left, 0.5 is on the right, and the middle value is 0.35. जो नई वैल्यू आ गई उसको मिडिल में डाल दिया, बिकॉज हमने नई वैल्यू 0.35 आई है, तो 1 is not useful, although this changing is done on the basis of a test that is given in the step 6. With new values, function values evaluated, h1, h2 evaluated, ratio gamma is evaluated, the value of a, b, c evaluated, and the new x value. New x value of function value देखी, it's becoming very small. Then readjustment of x1, not x1 and x2. Function values calculation again, and the whole process again, and this time this function value is 10 to the power minus 7, that is correct to 7 decimal places. And in the next iteration, 10 to the power minus 9, so correct to 9 decimal places. So you can say that this process is converging very rapidly. The reason of its convergence rapidly is that we are assuming that the function is behaving like a quadratic function. So it's a higher degree approximation. Higher degree approximation means you are going to have rapid convergence. So in only 3 iterations, this quadratic process of Muller's method gives accuracy of 6 decimal places. With that, I will stop today's discussion, and I will, inshallah, discuss the development of Muller's method next time. And we will consider at least one more method next time, if time allows, because next time मैंने आपसे promise किया है कि last 15 minutes में एक short quiz होगा. This short quiz will require you to solve a non-linear equation. अगर आपसे मैं secant method या bisection method या false position method कहूँगा तो आपको initial interval बताऊंगा जिस पे कि आपने काम करना है. यानी रूट लोकेटिंग रूट जो है वो फॉर द टाइम बिंग मैं आपसे टेस्ट नहीं कर रहा हूँ. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नाउ फेमिलियर विद द बेसिक आइडिया ऑफ लोकेटिंग द रूट. अगर मैं न्यूटन मेथड का सवाल पूछता हूँ आपसे तो मैं आपको इंटरवल भी दे सकता हूँ. अगर मैं आपको कहूँ कि फाइंड रूट बिटवीन दिस एंड दिस नंबर यूजिंग न्यूटन मेथड, तो आई सजेस्ट कि आप उन दो नंबरों के मिड पॉइंट से न्यूटन मेथड का x0 लेके फिर x1 कैलकुलेट करें, फिर x1 लेके x2 कैलकुलेट करें, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये 3 मेथड है, बाइसेक्शन, सीकेंट और न्यूटन, जिस पर कि मैं कुछ छोटा सवाल दे सकता हूँ. मुझे ये उम्मीद थी कि मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट should have adopted the use of Excel sheet by now, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हुआ नहीं. Most of the queries, या कम से कम जिन लोगों ने जिनकी क्वेरी आई वो क्वेरी जो थी that was based on manual work, that is using a calculator. So if you people are still stuck up with use of calculator, मैंने कैलकुलेटर रिकमेंड किया था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर फिजिकल एग्जाम होता है
तो फिजिकल एग्जाम में तो आपने कैलकुलेटर ही इस्तेमाल करना है। यू मे नॉट बी एक दफ़ा मैं न्यूमेरिकल का, जबकि स्टूडेंट 30-35 थे, न्यूमेरिकल का एग्जाम लैब में दे चुका हूँ, जिसमें फिर मैंने पेपर जो है वो हैवीली कंप्यूटेशनल दिया था, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने थे और स्टूडेंट्स वे रिक्वायर्ड टू डू दैट ऑन कंप्यूटर्स। और वो कंप्यूटर की फाइल्स जो हैं वो अपनी एक ही एक्सेल शीट में मुख्तलिफ पेजेस पे जो एक्सेल शीट में अवेलेबल होते हैं, just like here, first sheet question number 1, second sheet I started doing question number 2. इरादा था कि मैं आपके ये प्रॉब्लम्स जो है सारे के सारे एक शीट में सॉल्व कर लूंगा, सो दैट मुझे चेकिंग में आसानी हो जो आप लोग रिजल्ट सबमिट करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप एक्सेल शीट जो है, ओके मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है, एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, एंड नाउ आई विल स्टॉप द लेक्चर। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, आई एम क्विज कैसे लेंगे? क्विज कैसे लूंगा? uh, मैं आपको एक सवाल दे दूंगा जो आपकी स्क्रीन पे होगा, आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर आप पेपर पे सॉल्व कर रहे हैं, उस पेपर की पिक लेंगे और LMS पे अपलोड कर देंगे, या मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कहाँ भेजें। 10 मिनट का क्विज है, 20 मिनट का टाइम होगा सब, यानी 10 मिनट करने के, 10 मिनट सबमिट करने के। तो यू हैव टू सेंड मी थ्रू टू कीप सीक्रेसी टू माय ईमेल एड्रेस। हाँ, तो मुझे रात को ईमेल एड्रेस अपना जो है वो खंगालना पड़ेगा बहुत। एनीवेज, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।